Hi, this is Kunal Madan Advocate from KMA Law Office. So I've been getting calls from my clients, friends, and their family members who are either a landlord or a tenant inquiring about their legal status of the relationship with their landlords and tenants and their respective liability as well. So in this video, we will discuss about the legal status of the landlord-tenant relationship in light of the coronavirus and their practical solutions. So let's first examine the landlord-tenant relationship in light of the coronavirus. So पहली चीज जो भी लैंडलॉर्ड टेनेंट के रिलेशनशिप के अंदर आती है वो कहते हैं यार देयर इज अ कोरोना वायरस देयर इज अ कंप्लीट लॉकडाउन ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन वी हैव नो बिजनेस नो इनकमिंग नो कैश फ्लोज सो ये कैन दिस बी कवर्ड अंडर फोर्स मेजोर then the answer for the force majeure is no. लैंडलॉर्ड टेनेंट का जो भी रिलेशनशिप है दिस इज नॉट कवर्ड अंडर द क्लॉज ऑफ फोर्स मेजोर. Recently, Supreme Court has dismissed the petition of the lawyers claiming the exemption of the payment of rent of the chambers और फोर्स मेजोर की क्लॉज को इन्वोक कर रहे थे. सो फोर्स मेजोर इज नॉट कवर्ड इन द रिलेशनशिप ऑफ द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड. दूसरी चीज, if we examine Section 4 of the Epidemic Act, so this is the epidemic, coronavirus is an epidemic, nationwide lockdown है. So practically you cannot proceed against the tenant और Section 4 specifically बार करता है ऐसी कोई भी proceedings. Second, जो urgent matters हैं सिर्फ कोर्ट में उन्हीं की hearing हो रही है. If you want to proceed against your tenants in this scenario आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे बिकॉज दीज मैटर्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द अर्जेंट मैटर्स. सो अब इसका अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जो टेनेंट है उसकी लाइबिलिटी है ही है रेंट पे करने की, बट आप उसके अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. सो प्रैक्टिकली अब आपको क्या करना है, आपको एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है जो कि सोल्यूशन है विन विन सिचुएशन. आपके टेनेंट्स के लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है और आपने अपने लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है. टेनेंट, आपके पास दो ऑप्शन है. आइदर यू कैन प्रोसीड अगेंस्ट द टेनेंट इन फ्यूचर and consider this as a default. If you really want your property back, you have a bright chance to consider this as a default from the tenant side. The second situation is, as of now you would not be able to find a tenant in the market. So दूसरी situation में you can sit down and negotiate with your tenant and आप शायद रेंट रिड्यूस भी कर सकते हैं इफ़ ही इज़ अफेक्टेड बाय दिस लॉकडाउन, और आप वेवर भी दे सकते हैं उसको 1 या 2 महीने का इफ़ ही इज़ अफेक्टेड बाय दिस लॉकडाउन. अगर इफ़ ही इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दिस लॉकडाउन, let's suppose he is into the medical field or is a doctor or she's a nurse or her business is not affected by the lockdown or essential service में deal करते हैं, his business is not affected in the lockdown. In that case, it's always, I would always prefer to proceed against tenant. It should not act as an excuse जिसकी वजह से वो ये excuse ले कि नहीं नेशन वाइड लॉकडाउन है and we are not able to pay rent. Now we comes to the tenant perspective. अगर आप एक tenant हैं then आपको विन विन सिचुएशन आपको भी क्रिएट करनी है. If you are not affected by this nationwide lockdown, then you should ideally pay the full rent. You should not take it as an excuse. And if you're really affected by the lockdown, then in that case you should sit down with the landlord, considering कि आपकी liability तो है, but landlord को भी आगे नए tenants मिलना is going to be difficult. So considering this aspect, you should negotiate with the landlord and you should create a win-win situation. You can claim a waiver or you can claim a reduction in the rent, and आप दोनों के लिए win-win situation आप create कर सकते हैं considering these legal aspects and this practical solution. I hope this video has brought some light and some clarity on the legal status while dealing with your landlord or the tenants and regarding to the legal status.
Thank you so much.